हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय उस्मान एडिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सीबी एडिटिंग, कुछ इस टाइप की सीबी एडिटिंग। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से मैं फोटो से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेव कर लें। फोटो सेव करने के बाद ऑटोडेस्क स्केच बुक को ओपन करना है। हम फोटो को स्मूथ और थोड़ा गोरा करेंगे, तो हमारा हेयर ओवर को थोड़ा सा बाउंस बना लेंगे। आप एकदम साइज देख लें कैसे कैसे मैं रख रहा हूँ। आप एक जगह स्क्रीनशॉट इसका ले भी सकते हैं। साइज को करने के बाद अब थोड़ा हम फेस पे चला लेंगे, हम स्मूथ कर लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से फेस को चला देते हैं जल्दी से। तो हम फोटो को स्मूथ कर लिए हैं। देखिए कि हम अच्छे तरीके से फोटो को स्मूथ करने, इसी तरह आप भी कर लेना। अब करने के बाद हम चलते हैं अपने हेयर को बनाते हैं। तो देख लीजिए साइज हम कैसे करते हैं। साइज रखने के बाद तो आप करने के बाद हेयर को हम चला देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हेयर को। तो चलिए जल्दी से हम हेयर को बड़ा कर लेते हैं।
हेयर भी कंप्लीट हो चुका है, हम चलते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. फेस को गोरा करने के लिए चलिए हम जल्दी जल्दी फेस को गोरा कर लेते हैं। I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. तो दोस्तों देखिए हमारा फोटो कितना अच्छा तरीके से सीवी एडिटिंग हो चुका है। तो दोस्तों चलिए हम फोटो को सेव करते हैं। तो गाइस फोटो को सेव करने के बाद हम चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन करने के बाद हम थोड़ा सा और कलर ग्रेडिंग कर लेंगे फेस का और बैकग्राउंड का। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं।